इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन। मतलब फ्रेज का पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिखने में इनका मतलब कुछ और लगता है लेकिन होता कुछ और है। और आप इन्हें तभी याद रख सकते हैं जब आप इन्हें 3-4 बार अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे और यूज़ करेंगे। और इनसे पहले आप स्टेप 1 में दी गई सभी क्रिया याद ज़रूर कर ले। फ्रेजल वर्ब यूजिंग एक्ट। एक्ट एस। एक्ट एस मतलब भूमिका निभाना। इसका एक सेंटेंस है, जैसे ही एक्टेड एज ही एक्टेड एज एन arbiter टू सॉल्व द disputes, या फिर ही एक्ट्स एज ए सीनियर मैनेजर व्हेन एवर द बॉस इज ऑन हॉलीडे, या फिर आई एक्टेड एज एन इंटरप्रेटर एट द मीटिंग। सेकंड है एक्ट आउट। एक्ट आउट मतलब विचारों या भावनाओं का हमारे कर्म में नज़र आना या फिर व्यक्त होना। जैसे चिल्ड्रंस नेगेटिव थिंकिंग ऑफन एक्ट्स आउट इन दियर बैड बिहेवियर, या फिर ही डजंट एक्ट आउट हिज वर्ड्स, या फिर हैविंग रीड द स्टोरी द चिल्ड्रन एक्टेड आउट द स्टोरी ऑन द स्टेज। 3 एक्ट फॉर। एक्ट फॉर मतलब किसी के बदले उसके स्थान पर काम करना। जैसे इफ़ यू डोंट हैव ए लॉयर द स्टेट विल अपॉइंट वन टू एक्ट फॉर यू, या फिर आई हैव ऑथोराइज्ड हिम टू एक्ट फॉर हिम वाइल आई एम अवे, या फिर एज द प्रिंसिपल इज इल आई एम आस्किंग द वाइस प्रिंसिपल टू एक्ट फॉर हिम टुडे। नेक्स्ट है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन मतलब असर होना, असर करना या प्रभाव डालना या कार्रवाई करना। अनडाउटेडली दिस मेडिसिन इज एक्टिंग ऑन मी, द मेडिसिन एक्टेड ऑन द पेशेंट, द पुलिस आर एक्टिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाई एन नाउन पर्सन। 5 एक्ट अपन। एक्ट अपन मतलब मानना या चलना किसी की सलाह पर। जैसे सेंटेंस दिया हुआ ही डजंट एक्ट अपन माई एडवाइस, इफ यू शुड एक्ट अपन माई एल्डर्स एडवाइस, आई ऑलवेज एक्टेड अपन हिज वर्ड्स। 6 एक्ट अप सही से काम न करना। माई कंप्यूटर हैज़ बीन एक्टिंग अप सिंस मॉर्निंग सो आई विल हैव टू गेट इट रिपेयर्ड, इफ़ यू एक्ट अप यू विल बी पुनिश्ड, माई बाइक इज एक्टिंग अप अगेन देयरफॉर आई विल हैव टू टेक इट टू द मैकेनिक। नेक्स्ट है एक्ट लाइक, किसी की तरह हरकत करना। नेक्स्ट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना या लालन पालन करना या मुद्दा उठाना। जैसे आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़, या फिर शी इज़ अलोन टू ब्रिंग अप हर फैमिली, या फिर आई डिड नॉट वांट टू ब्रिंग अप दैट मैटर। नेक्स्ट है 9 ब्रिंग ऑफ, किसी मुश्किल काम को करने में सफल होना। जैसे द आर्मी ब्रॉट द मिशन ऑफ ब्रेवली, या फिर नो वन थॉट दैट ही वुड क्रैक द SSCGL एंट्रेंस एग्जामिनेशन बट ही ब्रॉट इट ऑफ। 10 ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन मतलब पैदा करना, किसी चीज़ के घटित होने का कारण बनना। जैसे द लाउड म्यूजिक ब्रिंग्स माई हेडेक ऑन, या फिर ही ऑलवेज ब्रिंग्स disgrace and shame on the whole family. Second thing, vitamin deficiency brings on my elements। यार ब्रिंग बैक का मतलब होता है आते समय कुछ लेकर आना या याद दिलाना, वापस आना। जैसे यू ऑलवेज ब्रिंग मी बैक समथिंग नाइस वेन एवर यू गो अब्रॉड, या फिर दिस प्लेस ब्रॉट माई ओल्ड मेमोरीज बैक, कैन यू ब्रिंग हिज लाइफ बैक। नेक्स्ट है 12 ब्रिंग आउट, प्रकट करना या बाहर निकालना, कोई नई चीज़ निकालना। नोकिया इज़ गोइंग टू ब्रिंग आउट द न्यू मॉडल सून, या फिर यू विल हैव टू वेट अंटिल दे ब्रिंग आउट द न्यू मॉडल, या फिर यू हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ।
नेक्स्ट तेरा ब्रिंग अबाउट उत्पन्न करना, बनाना, घटित करना। यू कैन ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द सोसाइटी विथ योर स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। योर लिटिल एफर्ट कैन ब्रिंग अबाउट ए ड्रास्टिक चेंज इन योर सेल्फ। योर बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग में ब्रिंग अबाउट कैंसर। ब्रिंग अंडर मतलब काबू में लाना या फिर काबू पाना, किसी चीज़ में शामिल करना। द फायर हैज़ बिन ब्राउट अंडर कंट्रोल, या फिर द रिबेल्स वर क्विकली ब्रोट अंडर कंट्रोल। या फिर शरद यादव सजेस्टेड द सेंटर टू ब्रिंग पेट्रोल एंड डीजल अंडर द एम्बिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी टू प्रोवाइड रिलीफ टू द कॉमन पीपल। या फिर ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब प्रस्ताव रखना, किसी कार्य को पहले करना। योर प्रपोजल दैट यू ब्रॉट फॉरवर्ड इज टोटली इम्पेरिटियल। सोलह, ब्रिंग इन मतलब शामिल करना, बुलाना, बिक्री से कमाना, इकट्ठा करना। 5 experts were brought in to judge this matter। या फिर द पुलिस ब्रॉट इन 2 men फॉर क्वेश्चनिंग। या फिर हाउ मच डज यू वीकली सेल ब्रिंग इन। अब ब्रेक इन मतलब सिखाना, घोड़े को ज़बरदस्ती खोलना। हाउ मच टाइम विल यू टेक टू ब्रेक इन माई हॉर्स। दया हैज़ टू ब्रेक इन द डोर व्हेन देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम इनसाइड। या फिर ब्रेक इनटू किसी इमारत में चोरी के इरादे से जबरदस्ती घुसना। द थीफ ब्रोक इनटू आवर हाउस लास्ट नाइट। द बुलडॉगर ब्रोक इनटू द बिल्डिंग एंड स्टोल द प्रीसियस ज्वेलरी। द डेकेट्स ब्रोक इनटू द बैंक लास्ट नाइट, स्टोल ऑल द केस। अगला ब्रेक आउट मतलब बस निकलना, फायर होना, फैल जाना, अचानक से शुरू हो जाना। द प्रिजनर ब्रोक आउट द प्रिजन। या फिर द थर्ड वर्ल्ड वार कैन ब्रेक आउट एनी टाइम। या फिर एबोला वायरस हैज़ ब्रोकन आउट इन मैनी सिटीज़ ऑफ इंडिया। या फिर द फायर ब्रोक आउट इन द फॉरेस्ट एट मिडनाइट। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ, मित्रता तोड़ना या टूटना, अचानक रुकना। रोहन एंड करण वर bosom friend but they seem to have broken off now। She was saying something about Rahul but broke off as she saw him। नेक्स्ट है ब्रेकअप मतलब ख़त्म करना, बिखेर देना, खदेड़ देना। डोंट लेट ए लिटिल डिस्पीच ब्रेकअप ए गुड रिलेशनशिप। या फिर वाई डिड यू ब्रेकअप विथ हर। या द पुलिस हैड टू यूज टीयर गैस टू ब्रेकअप द क्राउड। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन मतलब ख़राब हो जाना, असफल हो जाना, अचानक रोना शुरू कर देना। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, शी ब्रोक डाउन एट द फनरल। हिज हेल्थ इज ब्रेकिंग डाउन अंडर द प्रेशर ऑफ वर्क, द वॉक बिटवीन 2 सेंचुरीज ब्रोक डाउन। नेक्स्ट है ब्रेक लूज खुल जाना। माई कुक ब्रोक लूज एंड रेन अवे, माई स्मॉल बोट ब्रोक लूज फ्रॉम इट्स एंकर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ब्रेक अवे अपने आप को बंधन से छुड़ाकर भाग जाना। द 4 people ट्राई टू होल्ड द बफेलो बाय द ब्राइबल बट द बफेलो ब्रोक अवे। नेक्स्ट है ओके है उल्टा पुल्टा कहाँ है। अच्छा ये गो अवे मतलब चले जाना, दूर चले जाना, निकल जाना। गो अवे फ्रॉम हियर एंड लीव मी अलोन। या फिर द डॉग स्निफड एट द बोन एंड वेंट अवे। या फिर गो अगेंस्ट मतलब के खिलाफ जाना। यू आर गोइंग अगेंस्ट अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। द केस माई इट गो अगेंस्ट यू इफ़ यू डोंट डू समथिंग नाउ। गो अहेड मतलब आगे बढ़ना, शुरू करना। गो अहेड एंड गेट ओवर यूर नेगेटिव थिंकिंग। या फिर अनलेस यू ट्राई यू कैंट स्टे वेदर यू सक्सीड और नॉट, सो गो अहेड एंड ट्राई योर बेस्ट। गो अहेड एंड ब्रिंग द मिशन ऑफ। गो ऑन मतलब कुछ घटित होना, जारी रखना, चलते रहना। व्हाट्स गोइंग ऑन। या फिर जस्ट रिमेंबर लाइफ ऑलवेज गोज ऑन, गो ऑन स्पीकिंग द ट्रूथ। गो डाउन कीमत घटना, नीचे जाना। गो अप मतलब कीमत बढ़ना, ऊपर जाना। प्राइस ऑफ पेट्रोल डीजल आर नॉट गोइंग डाउन और कमिंग डाउन। द इंडियन रुपी इज लाइकली टू गो अप अगेंस्ट यूएस डॉलर। गो आफ्टर मतलब पीछा करना, पीछे जाना। ही पिकअप्ड अप द बंडल ऑफ लोगोज एंड वेंट आफ्टर द ओल्ड मनी। द कैट वेंट आफ्टर द बर्ड बट इट फ्ली अवे। इफ यू डोंट गो आफ्टर वॉट यू वांट यू विल नेवर हैव इट। गो थ्रू मतलब पढ़ना, किसी चीज़ से गुजरना, सामना करना, झेलना, सहना। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दैन जस्ट गो थ्रू दिस लेसन वंस अगेन। पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ in order to bring up their children।
I had to go through many difficulties while writing this book. Go off मतलब भटक जाना, बंद हो जाना. Humanity is going off the track. You are going off the topic. Please come to the point. No sooner did I enter my room than the light went off. The gong went off with a loud bang in crowd place. Next, I go under Asfalona Diwali Odana. The Kingfisher Airlines was in debit from the start and it finally went under. The firm will go under unless business improves in few days. I tried many business but I always गो इनटू मतलब छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना, कोई नौकरी करना शुरू करना. द पुलिस हैव बीन गोइंग इनटू द मैटर फॉर मेनी डेज. शी वांट्स टू गो इनटू जर्नलिज्म. आफ्टर अर्निंग मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स शी वेंट इनटू बैंकिंग. गो आउट मतलब बुझाना या बुझ जाना, पुराना. हु वेंट आउट द फायर या फिर द कैंडल वेंट आउट बिकॉज ऑफ द गेस्ट ऑफ वाइंड. येलो पेंट्स वेंट आउट ऑफ थ्रेशोल्ड रीजन ऑफ पॉपुलरिटी. गो अबाउट भ्रमण करना, लगे रहना. It is dangerous to go about such an act. How should I go about reducing weight? How should I go about my business? Go back on मतलब मुकर जाना, पीछे हटना. Don't go back on your promise or don't back out of your promise. He always goes back on his words. My boss has gone back on his promise and decided to fire me from this job. गो अलोंग साथ देना, सहयोग देना, किसी के साथ जाना. विल यू गो अलोंग विथ मी ऑन दिस इशू? वाई डू आई गो अलोंग विथ यू ऑन दिस इशू? ही रिफ्यूज टू गो अलोंग विथ मी ऑन दिस मैटर. शी वेंट टू द रेलवे स्टेशन अलोंग विथ हर हस्बैंड. गो एट मतलब हमला करना. द टू बॉयज वर गोइंग एट ईच अदर लाइक मैड डॉग इन पब्लिक. दे वेंट टू एट ईच अदर फ्यूरियसली. गो विदाउट. कैन यू गो विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज? नो वन कैन गो विदाउट वाटर. Go with male khana. I think this tie will go with the blue shirt. I think this black shirt will not go with your yellow tie. Go wrong खराब हो जाना, कुछ गड़बड़ होना. What has gone wrong with your motorcycle? What has gone wrong with your new car? Next go around मतलब फैलना, पर्याप्त होना, किसी के साथ चक्कर होना. Be careful, the flu is going around these days. If I am afraid we don't have enough cakes to go around. These chairs are enough to go around. If I think she is getting around with someone in her voice. Go over मतलब जांचना, नज़र करना, चेक करना. Go over your assignment before you hand it. Go over your report carefully for grammar and spelling mistake. Go by मतलब पास से निकल जाना. 5 years went by. If time goes by like a dream. अब you get away with. गेट अवे विथ मतलब भाग जाना, बच निकलना. द डेकेट्स गो अवे विथ ऑल द केस एंड ब्रिच हिज ज्वेलरी. या फिर ही ऑफन चीट इन द एग्जामिनेशन बट ऑलवेज गेट्स अवे विथ द पनिशमेंट. या फिर द थिफ गो अवे विथ द पनिशमेंट. गो अलॉन्ग विथ मतलब अच्छे संबंध होना, घुल मिलकर रहना. आई डोंट गेट अलॉन्ग विद माई सिस्टर. ही गेट्स अलॉन्ग विथ हिज कलीग. द गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर एंड वेरी वेल. गेट ऑन मतलब किसी वाहन पर चढ़ना, बस, ट्रेन, एरोप्लेन. हरी अप, गेट ऑन द बस. If every time I get on a plane, I feel very nervous. My brother saw her get on the bus at the bus stop. Get off मतलब किसी वाहन से उतरना. He was getting off the bus when I saw him the first time. He will get off at the next stop. He got off the bed and opened the door. एक होता है get about मतलब घूमना, इधर उधर जाना. I go out about a lot with my last job. These days people have getting about a lot. Get to मतलब पहुँचना. गोपालपुर is a remote area in Bengal and difficult to get to. We have to go to airport by 10 a.m. How can we get to the remote area? Next है get over मतलब ऊपर जाना, किसी मुसीबत या परेशानी से बाहर निकलना. I used to have a fear of spiders, but now I have got over it. It took him years to get over the shock of his wife's death. It can take months to get over this deadly disease. नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ, बाहर निकलना. गेट आउट ऑफ माई रूम. इज़ देयर एनी वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम? या फिर गेट आउट ऑफ योर लेजीनेस एंड डू समथिंग बिग. नेक्स्ट है गेट थ्रू मतलब सफल होना, पूरा करना. आई ट्राइड टू कॉल हर बट कुडंट गेट थ्रू. या फिर आई बर्नड द मिड नाइट ऑयल बट आई कुड नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन. व्हेन विल यू गेट थ्रू विथ योर प्रोजेक्ट? नेक्स्ट है गेट टुगेदर, इकट्ठा होना, एक दूसरे से मिलना, इकट्ठा करना, समय बिताना. We got together in colleague after a long period of 4 years. Let's go out together this weekend. I'm trying to get together enough money to buy a new house.
नेक्स्ट है गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, पीछे छुड़ाना। आई कुड सम हाउ गेट रीड ऑफ देम, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस बोरिंग लाइफ, आई एम नॉट एबल टू गेट रीड ऑफ माई हैबिट। गेट डाउन, किसी सवारी से उतरना, निराश करना, किसी ने से पूछना, काम पर ध्यान देना। गेट डाउन फ्रॉम द हॉर्स एंड लेट मी होल्ड इट बाय द ब्राइडल और इट विल ब्रेक अवे, यू ऑलवेज गेट मी डाउन। आफ्टर ए लॉन्ग रिसर्च आई हैव गोट डाउन टू दीज रिजल्ट, लेट्स गो डाउन टू स्टडीज एज द एग्जाम आर अप्रोचिंग नियर, इट्स टाइम आई गेट डाउन टू बिजनेस सीरियसली। नेक्स्ट है कम एट, महत्व समझ में आना। फाइनली ही केम एट द वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी, पीपल आर कमिंग एट द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ, दिस लाइफ। नेक्स्ट है कम बाई, हाथ लगाना, मिलना, प्राप्त करना। हाउ डिड यू कम बाई योर स्टॉलिन मोबाइल, हाउ डिड यू कम बाई दीज कार्स ऑन योर प्लेस, गवर्नमेंट जॉब आर हार्ड टू कम बाई दीज डेज। नेक्स्ट है कम अलोंग विथ, किसी के साथ चलना, किसी के साथ आना। ही केम अलोंग विथ हिज पेरेंट्स, या फिर आर यू कमिंग अलोंग विथ अस, या फिर व्हाट हैपन टू हिम, वाई इज ही नॉट कमिंग अलोंग विथ अस। कम टू नो, पता चलना या पता चलना। इफ़ ही डिड नॉट टेल मी आई वुड नॉट कम टू नो, इफ़ आई कम टू नो आई विल डेफिनेटली टेल यू। कम आउट मतलब स्पष्ट होना, सामने आना। द ट्रूथ हैज़ कम आउट दैट शी हैज़ स्टोलन द मनी, द ट्रूथ हैज़ कम आउट एट लास्ट, व्हेन विल दिस बुक केम आउट। नेक्स्ट है कम अक्रॉस, संयोग से मिलना, अचानक से मुलाकात होना। आई केम अक्रॉस ऑन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन यस्टरडे, इफ़ यू कम अक्रॉस माई मोबाइल प्लीज़ इन्फॉर्म मी। नेक्स्ट है कम ओवर मतलब किसी के घर आना। वाई डिड यू नॉट कम ओवर फॉर लंच ऑन सैटरडे, व्हेन डिड यू फर्स्ट कम ओवर इन इंडिया, ही इज़ कमिंग ओवर फॉर डिनर टुडे। नेक्स्ट है कम ऑफ, अलग होना, बाहर आना, जीतना, घटित होना। डोंट पुल सो हार्ड और द हैंडल विल कम ऑफ, आई हैव कम ऑफ ऑल माई प्रॉब्लम, सी केम ऑफ वेल इन द डेबिट कंपटीशन, माई ब्रदर्स मैरिज विल कम ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगला है कम ऑफ मतलब नतीजा निकलना, नथिंग विल कम ऑफ इट, गुड थिंग्स कम ऑफ गुड डेड्स। कम अप मतलब अचानक से आना, अचानक प्रकट होना है, पहुँचना। ए स्ट्रेंजर केम अप टू आवर हाउस एंड देन टर्नड अवे, ही केम अप विथ ए ग्रेट आइडिया, ए ब्रिलियंट आइडिया केम अप इन योर माइंड। कम टू होश में आना, कुल मिलाकर कीमत होना। हियरिंग द बैड न्यूज़ शी फेंटेड व्हेन शी केम टू द, शी स्टार्टेड क्राइंग। शी केम टू एन आवर आफ्टर द ऑपरेशन, योर चार्ज ओवर ऑल दिस आइटम कम टू आर 800। कम डाउन विथ कोई बीमारी हो जाना। ही केम डाउन विथ फ्लू एंड विल नॉट बी एबल टू गो टू वर्क फॉर ए फ्यू डेज, या फिर आई केम डाउन विथ ए बैड कोल्ड लास्ट नाइट। नेक्स्ट है पुट ऑन, पहनना, वजन बढ़ना। टेक ऑफ दिस सेट एंड पुट ऑन द रेड वन, ऑल्सो पुट ऑन योर न्यू शूज। ही हैज़ पुट ऑन ए लॉट ऑफ वेट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई ईट ए लॉट, आई एम नॉट एबल टू पुट ऑन माई वेट। नेक्स्ट है पुट ऑफ मतलब स्थगित करना, रद्द करना, टालना। ही हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग ओविंग टू हैवी रेन, डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आई केप्ट ऑन आस्किंग हिम अबाउट द मैटर बट ही वॉज पुटिंग मी ऑफ। नेक्स्ट है पुट अप, ऊपर टांगना या ऊपर लगाना, रहने के लिए जगह देना। द पियोन पुट अप एन नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, प्लीज हेल्प मी इन पुटिंग अप द पिक्चर ऑन द वॉल, यू डोंट नीड टू रेंट ए रूम, वी विल बी बाय हैप्पी टू पुट ऑन यू अप। नेक्स्ट है पुट बैक मतलब सही जगह वापस रखना। पुट द बुक बैक ऑन द सेल्स, नो वन कैन पुट बैक द क्लॉक। नेक्स्ट है पुट डाउन, नीचे करना, दबाना, शांत करना। नाउ यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन, द गवर्नमेंट पुट डाउन एट द रिवोल्ट बाय फोर्स, द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट टू पुट डाउन द राइट्स। पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना है, सहना। आई कॉन्ट पुट अप विथ योर एंगर, आई वॉन्ट पुट अप विथ योर ऑपरेशन एनी लॉन्गर, ही कॉन्ट पुट अप विथ योर बिहेवियर। पुट अवे मतलब रखना, किसी जगह से दूर रखना, किसी जगह से हटाना। कैन यू पुट अप योर बुक अवे फॉर अ वाइल, आई एम क्लीनिंग द टेबल, कैन यू पुट योर मोबाइल अवे, योर शूज आर सो डर्टी प्लीज पुट दैम अवे फ्रॉम ईयर। या फिर पुट फॉरवर्ड, सामने रखना, प्रस्ताव रखना। आई पुट फॉरवर्ड सम प्रपोजल टू रिफॉर्म द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। Here you can put forward your suggestion at the meeting, I have put forward your name for the nomination. Put out मतलब बुझाना, don't put out the fire, the firefighter struggled a lot to put out the fire in the market, you can't smoke inside, please put the cigarette out. Next है turn on मतलब चालू करना, light, TV, radio, fan, heater, please turn on the tap after turning on the radio. Turn on the shower, turn off मतलब बंद करना, बोर कर देना, please turn off the alarm और please turn off the alarm off. Oh, I forgot to turn the light off. Such a music always turns me off. Turn up मतलब आवाज़ बढ़ाना, हाजिर होना। Please turn the volume up. Only few students turned up due to heavy rain. If you don't turn up tomorrow, you will be expelled from the school. Next है turn down मतलब आवाज़ घटाना, ठुकरा देना। Would you please turn the volume down? He turned down my proposal.
वाई डिड यू टर्न डाउन हर इन्वेशन? टर्न अराउंड मतलब पूरी तरह से घूम जाना, पलटना, बढ़ना। द मोमेंट आई कॉल्ड आउट हर नेम शी टर्नड अराउंड। टर्न अराउंड एंड कम स्ट्रेट, प्लीज हेल्प मी इन टर्निंग द सोफा अराउंड। इफ़ वी वर्क टुगेदर आई एम श्योर आवर सेल्स विल टर्न अराउंड नेक्स्ट मंथ। टर्न अबाउट मतलब उल्टी दिशा में मुँह कर लेना। द मोमेंट ही सा हिज फादर कमिंग टुवार्ड्स हिम ही टर्न अबाउट, नो सूनर डिड आई सी हिम विद ए गर्ल देन ही टर्न अबाउट। टर्न अवे मतलब मोड़ देना, किसी को मोड़ देना, वापस कर देना। ही टर्नड मी अवे फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द वेल, ही रिब्यूक्ड हिम एंड टर्नड हिम अवे। हाउ कैन ए डॉक्टर टर्न अवे ए डाइंग मैन? टर्न आउट मतलब घुसा देना, किसी जगह से बाहर निकाल देना। ही टर्नड द स्टूडेंट्स आउट ऑफ द क्लास for not completing the homework. When you go to sleep, turn out the light. The road turned me out of the town. Turn in मतलब सौंपना या जमा करवाना, असाइनमेंट और रिपोर्ट। Turn in your homework please. Have you turned in your report? Would you like some milk before you turn it? नेक्स्ट है टर्न ओवर, पलटना या पेज पलटना, आगे करना। यू मे नाउ टर्न ओवर योर पेपर, टर्न ओवर द पेज एंड सी वॉट इज रिटन हियर वेन एवर आई डोंट लाइक एनी प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, आई जस्ट टर्न इट ओवर। नेक्स्ट है टर्न अपसाइड डाउन, पलट कर पूरे से उल्टा होना। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन, द पेंटिंग इज हैंग अपसाइड डाउन, प्लीज टर्न इट अपसाइड डाउन। यू आर होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन, टर्न इनसाइड आउट, अंदर वाले हिस्से को बाहर कर देना, जैसे कमीज पेंट। इट वॉज सो वाइंडी दैट माई अम्ब्रेला टर्नड्स इनसाइड आउट, टर्न योर शर्ट इनसाइड आउट, यू हैव पुट ऑन योर शर्ट इनसाइड आउट। टर्न असाइड, मार्ग से विचलित होना। पीपल ऑफन टर्न असाइड फ्रॉम द पैथ ऑफ ट्रूथ, डोंट टर्न असाइड फ्रॉम द पैथ ऑफ ट्रूथ। लुक फॉर, ढूंढना, खोजना। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर अंडर द टेबल, आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। डोंट लुक फॉर हैप्पीनेस, क्रिएट इट। लुक अप मतलब खोजना, किसी जानकारी, डायरी, डिक्शनरी, बुक। व्हाट आर यू लुकिंग अप इन द बुक, लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। आई ट्राई टू लुक इट अप ऑन द इंटरनेट बट आई कुड नॉट गेट थ्रू। लुक अप टू मतलब किसी की इज्जत करना, किसी पसंद करना। आई लुक अप टू ऑल दोज हु हेल्प अदर्स, ही लुक्स अप टू हिज एल्डर ब्रदर एज ए रियल लाइफ हीरो। आई लुक अप टू सेंट एम एस जी एज माई स्पिरिचुअल लीडर। नेक्स्ट है लुक एट मतलब देखना, एक दिशा से दूसरी तरफ। लुक एट द वाइट बोर्ड, लुक एट द दैट मैन हु इज स्टैंडिंग हियर। इफ़ यू चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स यू लुक एट द चेंज। लुक अहेड आगे देखना, जैसे भविष्य में। यू मस्ट लुक अहेड बिफोर वी मेक एनी डिसीजन, एज वी लुक अहेड इन टू द नेक्स्ट सेंचुरी लीडर्स विल दोज हु empower others. He who does not look ahead remains behind. Look back मतलब पीछे देखना। It is better to look ahead and prepare than a look back and regret. Don't waste your time looking back at what you have lost. Every moment wasted looking back keeps us away from moving forward. Look forward to मतलब किसी चीज़ की सकते में उम्मीद करना। I am looking forward to going to Paris next month. She is looking forward to seeing her grandchildren again. We are really looking forward to your reply. Look out मतलब तलाश में रहना, सावधान रहना। I'm on the lookout for a good job. The scientists are on the lookout for life on other planets. Look out, there is a bus coming. Look through, दोहराना, ध्यान से समझना, to read something quickly. Hurry up, look through the chapter. Just look through the files before you proceed further. I have looked through all the files. Look after मतलब देखभाल करना. Who looks after these plants? Who looked after you in the hospital? When I go to college, my mother looks after my dog. Look into, जांच पड़ताल करना है. The police are looking into the matter. You should look into the countly thoroughly. We will have to look into the problem to get together more information. Look down on किसी को तुच्छ समझना, कम समझना. He looks down on her because she does nothing. We should never look down on the poor. You should never look down on your opponent. Look down upon मतलब नफरत करना, किसी को शासन करना. No one should look down upon in the poor. Don't look down upon my human, for even my most inferior belief is greater in the eyes of God. Don't look down upon others, for we all are the children of God. Look over मतलब नज़र मारना, दोबारा से देखना. It will take 5 more days to me to look over this book. If I were you, I would look over this answer again. Let me look over the schedule first. Look on मतलब बहुत ध्यान से देखना. Everybody was looking on the live fight. Everybody looked on as they fought. The crowd looked on as the procession passed. Look around मतलब सभी जगह देखना, इधर घूमना. I am just looking around for a plot here. There are many old cars here. Let's look around. What are you looking around here in the shopping mall? नेक्स्ट है पास बाय मतलब बगल से गुजरना. शी जस्ट पास्ड बाय मी. ही ऑलवेज पासेज बाय आवर होम. पासेज अवे मतलब देहांत होना, गुजर जाना, मर जाना. माई ग्रैंड फादर पासेज अवे आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस. ही पास्ड अवे आविंग टू ड्राइंग. हिज फादर पास्ड अवे इन ए फेटल रोड एक्सीडेंट एस्टरडे. पास आउट मतलब शुद्ध बुद्ध, खो देना. Faint, lose, conscience, distribute. After hearing the news, she was so shocked that she passed out. Oh no, I forgot to pass out the question paper.
to the student. Call on मतलब person at thing, कुछ देर के लिए मिलने जाना, मदद मांगना. I will call on you in the evening tomorrow. Why did you not call at my home when you were here? The government called on the volunteers for food and shelters for the victim. Call off मतलब रद्द कर देना. We had to call off the program because of the curfew. The match had to the called off because of the bad weather. The mission had to called off because sea soldiers went down with flu. Call up मतलब इकट्ठा करना, याद दिलाना. When the picture called up the childhood memories. Don't call off the past event of your life that you can't put up with. Your wife had been calling you up since morning. Call for जरूरत होना, requirement or need की demand. He has called for your help. His study will call for a lot of job. The BJP has called for minister's resignation after he was exposed. Call for लेने के लिए आना. The landlord has called for rent. I will call you for tomorrow and we will go to the cinema together. Call at मिलने के लिए आना. In a letter he was asked to call at the bus stop. She called at my home when I was not there. I called at his office today but he was on leave. Call out मतलब अचानक से बुलाना. The he turned around the moment I called out his name. They had to call out an urgent meeting. The military were called out to put down on the rights. Call in मतलब किसी को किसी के उद्देश्य के लिए बुलाना. We need to call in an electrician because the power has been off and 2 days. I had to call in the police to sort out the matter. The CBI has been called in for further investigation. Hold on, चालू रखना, चलते रहना जैसे फोन. Please hold on for a minute. I'm getting you through in the manager. Could you please hold on for a few more seconds? Hold in, रोके रखना. He wanted to laugh and hardly could hold in. She held in her anger somehow. Hold up मतलब ऊपर करके पकड़ना, रोकना या देर देना. He is standing here there holding up a signboard with your name on it. The construction work has held up for want to for money. Sorry, I could not make it on time because the traffic held me up. Hold up मतलब किसी को जान से मार के धमकी दे देना. The robbers held up all the case from a lady gunpoint. The bikers held him and the took all the case. Hold up to मतलब किसी चीज़ में कितनी चीज़ में आ सकती है. The aeroplane can hold up to 4 passengers. The cricketer stadium can hold up to 4,000 spectators. Hold forth के लगातार किसी विषय पर बोलते जाना. He held forth all afternoon about government conspiracy theories. He will hold forth about this matter unless he is stupid. Hand in मतलब ध्यान दे देना. Please hand in your answer sheet before you leave the examination. Please hand in the documentation to me. Time is up. Please hand in your answer sheet. Hand out मतलब बांटना. Distribute the teacher. The teacher handed out the question paper to the student. The examiner asked me to hand out the worksheet. Hand over मतलब सौंपना. Hand over your gun and kneel down on the ground. The king handed over his kingdom in a favor of his son. नेक्स्ट है हैंड डाउन. एक दी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दे देना, जैसे नॉलेज ऑफ स्किल. द आर्ट ऑफ मेकिंग बंगलो हैज बीन हैंडिंग डाउन इन योर फैमिली ऑफ फ्री. द स्पिरिचुअल मास्टर हैव बीन हैंडिंग डाउन दियर सीक्रेट मेथड ऑफ इनलाइजमेंट टू द एमेसेज ऑफ जनरिस. द कोर्ट हैंडेड अराउंड द गिल्टी वर्डिक्ट. हैंड अराउंड मतलब किसी समूह में किसी लोगों में बांटना. वाई डिड यू नॉट हैंड द कुकीज अराउंड. आऊँगे चिल्ड्रन डोंट लाइक टू हैंड देयर थिंग्स अराउंड. हैंड बैक वापस करना. दिस इज़ माई बुक, हैंड इट बैक टू मी. नेक्स्ट है बियर ऑफ हथियार लेकर चले जाना. द बोर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी एंड वेंट अवे. सी बोर ऑफ द फर्स्ट प्राइज इन द पेंटिंग कंपटीशन. बियर विथ बर्दाश्त करना, सहना. आई कांट बियर विथ योर बैड हैबिट एनी मोर. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर टुडे जनरेशन टू बियर विथ क्रिटिसाइजम. बियर आउट प्रमाणित करना से समझाना. I can't. I hope the other witness will bear me out. The few pieces of evidence could not bear out the charge on him. If the evidence bears out the charge, he will be sent to jail. Bear on मतलब सही होना, संबंधित होना. Your remarks do not bear on the matter in hand. The book bears on the same subject as that. Bear down मतलब दबा देना, कुचल देना. He has been successful in bearing down all opposition. The dictator bore down in all opposition in that no time. नेक्स्ट है रन आउट ऑफ, खत्म होना, समाप्त होना. द बैटरी ऑफ माई मोबाइल रनिंग आउट ऑफ माई चार्जिंग. द अर्थ इज रनिंग आउट ऑफ फ्रेश वाटर. आई कैंट पुट अप विथ योर एंगर एनी मोर. माई पेशेंस हैज़ रन आउट नाउ. रन आफ्टर पीछे भागना. डोंट रन आफ्टर मनी. स्टॉप रनिंग आफ्टर. द वर्टिकली प्लेजर एंड सर्च फॉर पीस विथ यू. रन डाउन कमजोरी महसूस होना, खत्म होना, नीचे दिखाना. आर यू रन डाउन इन हेल्थ टुडे. माई फादर इज टेरिबिलिटी रन डाउन एंड अनफिट फॉर वर्क टुडे. The fresh water is running down on the earth. Ignorant people will always run down even the best book ever written.
रन ओवर जल्दी समझ जल्दी जल्दी रन ओवर जल्दी जल्दी समझना या पढ़ना, ऊपर से निकल देना। डोंट रन ओवर द रिलेशन, यू विल फॉरगेट इट एंड ए डे और सो। कुड यू प्लीज रन ओवर द पॉइंट अगेन, ए बस रन ओवर स्कूटिस्ट एंड किल्ड हर। रन अवे भाग जाना, चपत हो जाना, डर कर भाग जाना। द मोमेंट ही saw the police, he ran away from there, he ran away from the home from with all the case when he was just 10. When knock down, ध्वस्त कर देना, टक्कर मार देना, गिरा देना, हरा देना। The high wind gust knocked down dozen of trees and power lines in Delhi. If you drove the car properly, if you would not knock the cyclist down. Muhammad Ali knocked down his opponent in the very first round. Knock off काम करना, बंद करना, stop working. When do you knock off your work? I usually knock off work at 5 in the evening. Knock out मतलब किसी को प्रेरित करना, बेइज्जत करना. Please tell me how I can knock everyone out with my English. She knocked everyone out with her presentation at the meeting. Knock over बैंक, दुकान आदि लूटना. The robbery knocked over 2 banks in a day. The gang knocked over a jewelry shop yesterday. Let down, निराश करना. I don't want to let you down, but I can't support you in this matter. I did not intend to let you down by not completing the work on time. Let in, अंदर आने देना. She did not let me in. My mother opened the door and let us in. Open the curtains and let the sunshine in. Let out, रैप देना, बाहर निकाल देना, आवाज़ देना. You can make some extra money by letting out of your whole house. All the rooms are already occupied, so I can't let out any room to you. Wow, who let the cigarette out? The lion let out the great roar. She let out the scream of pain. Let on, बिना आज्ञा के भेद बताना, बता देना. Will you let on this talk to my sister? Please don't let on that you know me. नेक्स्ट है लेट इट ऑन, अपनी इच्छा से किसी को भेद बताना. सी लेट मी इन ऑन हर सीक्रेट दैट शी वॉज गेटिंग मैरिड टू रमेश. ही लेट मी इन ऑन वॉट ही वॉज प्लानिंग. लेट ऑफ छोड़ देना, थोड़ी सी ज़्यादा छोड़ देना. आई वॉज लेट ऑफ विथ ए वार्निंग. द जूरी लेट हिम ऑफ विथ ए फाइन रेदर देन पुटिंग हिम बिहाइंड द बार्स एज इट वॉज हिज फर्स्ट ऑफेंस. डोंट लेट ऑफ द फायर वर्क इन द वर्क क्लास. 2 मिलिटेंट्स लेट ऑफ देयर गन्स एट द विलेजर्स. लेट अप कम होना, प्रभाव कम होना, थोड़ा ठंडा होना. व्हेन विल द रेन लेट अप? इट इज रेनिंग कार्ड्स एंड डॉग्स हियर, सो विल हैव टू वेट अंटिल इट लेट्स अप. अबाइड बाई, पालन करना, पूरा करना. यू मस्ट अबाइड बाई द रूल्स. ऑलवेज अबाइड बाई योर प्रोमिस. अबाइड एट, किसी जगह पर रहना. आई विल अबाइड एट द बस स्टॉप टिल द बस अराइज. अबाइड इन हाउस, किसी जगह में रहना. वी हैव बीन अबाइडिंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 5 years. अबाइड विथ, किसी जगह के किसी व्यक्ति के साथ रहना. सी डजेंट अबाइड विथ मी इन डिफिकल्ट टाइम. कैरी आउट, आगे पालन करना. ए गुड प्लेयर मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ हिज कोच. आई विल डू माई बेस्ट टू कैरी आउट ऑफ योर ऑर्डर्स. वेट फॉर, किसी का इंतजार करना. वैन वॉट आर यू वेटिंग फॉर? टाइम डजेंट वेट फॉर एनी बॉडी. स्टैंड बाई, साथ देना, साथ खड़े होना. ऑलवेज स्टैंड बाई द ट्रूथ. आई वॉन्ट स्टैंड बाई यू एट एनी कॉस्ट. मेक आउट, समझना, मतलब निकालना, मतलब समझना. आई कुड नॉट मेक आउट वॉट ही रोट. योर हैंड राइटिंग इज़ टू स्मॉल टू मेक आउट. कैरी ऑन, लगे रहना, जारी रखना, आगे बढ़ना. आई कुड नॉट कैरी ऑन माई प्रोजेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ मनी. आई विल कैरी ऑन माई स्टडीज एंटिल आई गेट गुड जॉब. टेक अवे, लेकर भाग जाना, छीन लेना, दूर करना. द डेकेट्स टूक अवे विथ ऑल केस फ्रॉम द बैंक. नो बॉडी कैन टेक अवे योर फ्रीडम बट यू टू. पील ऑफ, छिलका उतारना. आई एम पीलिंग ऑफ द पोटेटोज. आर यू पीलिंग ऑफ द पोटेटोज? रिप ऑफ, लूटना. द शॉपकीपर वॉज ट्राइंग टू रिप ऑफ मी. डोंट इवन थिंक ऑफ बाइंग एनीथिंग फ्रॉम हिम. ही विल रिप यू ऑफ. सी ऑफ, अलविदा कहना, छोड़ने जाना. आई एम गोइंग टू एट द बस स्टॉप टू सी माई अंकल ऑफ. आई हैव सीन माई फ्रेंड ऑफ. काउंट ऑन, भरोसा करना. डोंट काउंट ऑन हिम. ही प्लेज फास्ट एंड लूज. नो बॉडी कैन काउंट ऑन हिज लॉयल्टी. फिल इन आउट, भरना. फिल आउट द फॉर्म एंड गिव इट टू मी. हु फिल्ड आउट फॉर्म दिस? फिल अप, भरना. ग्लास का, जार, बकेट, बोतल, कार, टिंक. Hearing the news of her friend's death, her eyes filled up with tears. The bucket is already filled up. Answer for, जिम्मेदार लेना, जिम्मेदार लेना. Remember, you will have to answer for your own bad deeds to God. The Prime Minister will have to answer for all the bad decisions that he has made. Answer back, पलट कर जवाब देना. Her mother was shocked when she started answering her back. He always used to answer his parents back. Roll out, चालू करना, लागू करना, प्रस्तुत करना. The prototype of the new jet aeroplane is to be rolled out soon. WhatsApp is going to roll out a new service to make it better soon. Blow out मतलब हवा से बूझना या फूंक मार कर कुछ बुझाना, साफ करना. The wind blew the candle out. We don't need candle. You can't blow. You can blow it out. Blew out of your nose. Back out.
वचन तोड़ना, अपने वादे से मुकरना, कदम पीछे हटाना। शी वॉज कंसिडर्ड ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू विन द इलेक्शन बट शी बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। दे बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस नाउ। हिंडर फ्रॉम रोकना, बाधा डालना। ही हिंडर्ड हर फ्रॉम डूइंग दिस वर्क। यू कांट हिंडर मी फ्रॉम डूइंग वॉट आई वॉन्ट। डोंट हिंडर मी इन बिजनेस। abstain from परहेज करना। I abstain from smoking and gambling. I abstain from meat and eating spicy foods. Heir to उत्तराधिकारी होना। She is the sole heir to large property. Who is the true heir to the throne? Hanker after someone or something, किसी चीज़ के पीछे लालियत होना। Most of the people hanker after money. Don't hanker after wealth all your life. पार्ट विथ अलग होना। आई कांट पार्ट विथ स्पिरिचुअल स्टोरेज एंड स्पिरिचुअलिटी। द मिजर डज नॉट लाइक टू पार्ट विथ इज मनी। रेफर टू हवाले करना, सौंपना। द पुलिस हैव रेफर टू द केस to the CBI for further investigation. They are thinking of referring the case to the police. The patient has been referred to the PGI. रेफर टू सहायता लेना से संबंधित होना, संकेत करना। इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड देन रेफर टू द डिक्शनरी। द वर्ड मैन रेफर टू ऑल ह्यूमन्स irrespective of their। What does the word he refers to in the passage comes to मतलब झुक जाना, घुटने टेक जाना। He succumbed to the truth at last. He succumbed to illness. I had to succumb to his obstinity. Agree with सहमत होना। Do you agree with me in this matter? I agree with you but to some extent. Agree to सहमत होना। I agree to your proposal. Finally she agreed to my proposal. Angry with गुस्सा होना। The teacher is angry with you. Why are you angry so angry with me? What wrong have I done to you? एंग्री एट किसी चीज़ या बात पर गुस्सा होना। आई एम एंग्री एट दिस बैड कंडक्ट। माई टीचर इज एंग्री एट माई वे ऑफ लिसनिंग। बिलीव इन विश्वास करना। आई बिलीव इन गॉड। डू यू बिलीव इन गॉस्ट। रिलाई ऑन भरोसा करना या फिर आई कांट रिले ऑन यू। यू कांट रिले ऑन मी फॉर हेल्प। ट्रस्ट इन पर्सन या थिंग। विश्वास करना। आई डोंट ट्रस्ट इन हिम बिकॉज ही इज बिग लायर। आई डोंट ट्रस्ट टू योर वर्ड्स। बोर्न ऑफ से जन्म लेना। ही वाज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। स्वामी वाज बोर्न ऑफ ऑन ऑर्थोडॉक्स मदर। बोर्न इन जन्म लेना फैमिली में। आई वाज बोर्न इन रिच फैमिली। शी वाज बोर्न इन पुअर फैमिली। बोर्न इन एट में जन्म लेना। हर बेबी वाज बोर्न एट होम। आई वाज बोर्न इन चंडीगढ़। आई बोर्न टू जन्म देना। ए स्वीट बॉय वाज बोर्न टू हर आफ्टर 20 years ऑफ लॉन्ग टाइम। ए स्वीट गर्ल वाज बोर्न टू हर आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूज ऑफ किसी चीज़ का दोष लगाना। ही वाज एक्यूज ऑफ रेप। शी वाज एक्यूज ऑफ किलिंग हर हस्बैंड। एक्यूज बाई किसी के द्वारा दोष लगाना। ही वाज एक्यूज by his wife. He was accused by his wife of killing the servant. Indebted to कर्जदार होना, ऋणी होना, बहुत धन्यवादी होना। पर्सन का I'm greatly indebted to you and your family. Indebted for कर्जदार होना, ऋणी होना, बहुत धन्यवादी होना। We are deeply indebted for your help. I am highly indebted to Ravi and his family for every possible help. Lean against सहारा लेना। Don't lean against the wall. Don't lean against the door. यूज़फुल टू पर्सन फॉर थिंग किसी के लिए लाभदायक होना। द बुक इज़ वेरी यूज़फुल टू अस। द योर हेल्थ टिप्स आर वेरी यूज़फुल टू मी फॉर माई हेल्थ। ऑब्लिगेटेड टू पर्सन एट थिंग आभारी होना। आई ऑब्लिगेट टू यू। ही इज ऑब्लाइग टू हर एट हर फैमिली हेल्प द हॉस्पिटलिटी। डिसग्रेटेड विथ पर्सन और लाइफ और थिंग तंग होना। आई एम डिसगस्टेड विद दिस लाइफ एंड वॉन्ट टू रिनाउंस द वर्ल्ड ऑफ पीस। आई एम टोटली डिसगस्ट विथ हिम एट इज नॉनसेंस टॉक। ब्रेकअप विथ झगड़ा करना। टू quarrel with दोस्त तोड़ना। शी ब्रोक विथ हर बॉयफ्रेंड। वाई आर यू ब्रेकिंग विथ मी। कुक अप ए स्टोरी मन घटत कहानी बनाना। ही ऑलवेज कुक अप ए स्टोरी फॉर बीइंग लेट। ही कुकड अप विथ ए स्टोरी फॉर हिज बीइंग लेट एज ऑलवेज। अनोइंड मतलब विथ पर्सन और थिंग नाराज़ होना। आई डोंट नो वाई शी इज़ अनोइड विथ मी। शी इज़ अनोइड विथ यू एट योर बिहेवियर। कट इन बीच में बोल पड़ना। डोंट कट इन माई वर्ड्स। इट इज़ नो गुड कटिंग इन वेन टू पर्सन आर थिंकिंग। कंप्लेन ऑफ थिंग टू पर्सन अगेंस्ट शिकायत करना। ही इज़ ऑलवेज complaining of stomach to his mother. He complained against you of beating him to the teacher. Exculpate from माफ़ करना, मुक्त करना। He my teacher exculpated me from paying fine. He was exculpated from paying tax. Expert in doing at thing उस्ताद होना, निपुण होना, दक्ष होना। He is expert in solving puzzles. He is expert at English language. Deal in से व्यापार करना, सौदा करना। My cousin deals in sugar. आई डील इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। डील विथ चर्चा करना, हल करना, बर्ताव पेश आना। हाउ डिड यू डील विथ योर प्रॉब्लम सो इजीली। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू डील विथ यू। कंपेयर विथ तुलना करना। कंपेयर यूर मार्क्स विथ द प्रीवियस पेपर। ही ऑलवेज कंपेयर्स विथ मी विथ माई ब्रदर। कंपेयर टू तुलना करना। लाइफ कैन बी कंपेयर टू ड्रामा। हाउ कैन यू कंपेयर ए लॉइन टू ए कैट। काउंट इन सम्मिलित करना या होना। इफ़ यू आर गोइंग टू द सिनेमा प्लीज़ काउंट मी इन। शुड वी काउंट हिम इन फॉर द ट्रिप। ड्रॉप इन अचानक से आ जाना, होते हुए आ जाना, टपक पड़ना, मिलने जाना। नो सोना डिड आई लॉक द डोर। ए फ्यू गेस्ट ड्रॉप्ड इन। प्लीज़ ड्रॉप इन हियर टुमारो। फ्लेयर अप अचानक कर होना, भड़कना शुरू होना।
You should not flare up on trifles. Why did he not flare up over the SCST Act controversy? Beg off, मना कर देना, to decline invitation करना. He promised me to arrive me to bus stop, yet he begged off. She begged off invitation of. Take after हमसे कलौना संदेश देना. She takes after her mother. He does not take after his father at all. फिगर आउट समझना, आखिरी लगाना, पता लगाना. फिगर आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट. कुड यू प्लीज हेल्प मी फिगर आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. अटेंड टू, ध्यान से सुनना, ध्यान देना. ही ट्राई टू अटेंड टू व्हाट हिज टीचर सेड. डॉक्टर्स ट्राई टू अटेंड टू वर्स्ट इंजर्ड पेशेंट फर्स्ट. लेट लूज, खुला छोड़ देना. द लॉइन वॉज लेट लूज ऑन द स्लेव. लिव ऑन, किसी चीज़ पर निर्वाह करना. स्क्वायरल्स लिव ऑन काउंटनट्स. अब आप अपने सबसे पहले इन 10 16 फ्रेज को अच्छे से याद करें और इन्हें अपनी जगह शामिल करें. अगर इन्हें याद करके छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आप उन्हें याद रहे, लेकिन आप इन्हें भूल जाएंगे. इसलिए आपको अच्छा तरीका है कि आप इन्हें याद करें और फिर इन्हें लगातार इस्तेमाल करें. आज आपको सभी